Hello everyone, let's solve problem C inversion graph. Let's read out the problem. You are given a permutation P1, P2 till Pn. Then an undirected graph is constructed in the following way. Add an edge between vertices I and j such that I is less than j if and only if Pi is greater than Pj. Your task is to count the number of connected components in the graph. Two vertices U and V belong to same connected component if and only if there is at least one path along edges connecting U and V. A permutation is an array consisting of n distinct integers from 1 to n in arbitrary order. For example, this. Okay, let's move on to the example. So the problem says that there is an edge between two numbers, two elements, if uh, the larger element lies on the left side of the array. Okay, for example, here 2 lies on left of 1. Similarly, 4 lies on the left of 3, so there is an edge between these two elements. Again in this example, 3 lies on the left of 1 and 2, so there is an edge between 3 and 2 and 3 and 1. Similarly, 2 lies on left of 1, so there is an edge between 2 and 1, and similarly for these three elements. So now let's move on to the solution part. So the problem says that there is an inversion when the larger element is on the left side of the array. So if suppose 4 lies here and 2 lies this side, so there is an edge between these two elements. Similarly, if one is lying here, so there would be an edge between 2 and 1, and similarly the configuration would look like this. So now let's take two connected components, say 1 and 2. Okay, so suppose it has an element x and it has an element y, so one of them must be bigger than the others. So let's say x is less than y. Okay, so what can we conclude about these two connected components from this information? So we can conclude that all the elements of this first connected components are less than all the elements of this the second connected component. Why? Because had there been any element in the second connected component which is less than any element of this connected component, then there would have been an edge between these two elements, and these two wouldn't have been distinct connected component. Okay, so we conclude that all the elements of this connected component is less than all the elements of this connected component. Fine. Okay, suppose this is the input array given. Let's say that this is the first connected component. Okay, till index I. So what can we conclude for this component? We can conclude that all the elements in this part of the array uh, are from 1 to n, 1 to I. Why? Because uh, had there been any element that is greater than I in this part of the array, so there must be some element from 1 to I in this part of the array. Okay, and there would be an edge between these two elements. Okay, so that would be contradiction. So all the elements in this part of the array must be from 1 to I. So पहला कनेक्टेड कंपोनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इटरेट करेंगे a1 से लेकर और चेक करेंगे कि किसी इंडेक्स i पर अगर इस पार्ट का जो मैक्सिमम एलिमेंट है a1 से लेकर ai तक में वो अगर i हो जाए,
maximum element from a1 to ai is equal to I. सो इस केस में ये पहला कनेक्टेड कंपोनेंट हो जाएगा. सिमिलरली अगर आगे इटरेट करेंगे और किसी इंडेक्स j पर अगर मैक्सिमम एलिमेंट टिल aj वो अगर j हो जाए तो ये पार्ट जो होगा ये सेकेंड कनेक्टेड कंपोनेंट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये इनपुट एरे ले लेते हैं 2 1 4 3 5. सो इस केस में क्या इटरेट करेंगे. यहाँ पर i1 है और मैक्सिमम एलिमेंट टिल यहाँ तक मैक्स जो है वो 2 है. यहाँ पे i जो है वो 2 है और मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ पे 2 है. तो ये पार्ट एक कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया. ओके. फिर यहाँ तक में मैक्सिमम जो है वो 4 है और i जो है वो 3 है. तो ये नहीं है. यहाँ तक में मैक्सिमम i जो है वो 4 है और मैक्सिमम जो है वो भी 4 है. तो ये पार्ट जो है ये सेकेंड कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया. और यहाँ पे i 5 है और मैक्सिमम भी 5 है. तो ये थर्ड कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया. तो टोटल कनेक्टेड कंपोनेंट 3 हो गए. सिमिलरली अगर ये एरे ले लेते हैं 3 2 1 6 5 4. तो इस केस में i जो है और मैक्स तो i1 है और मैक्स 3 है. यहाँ पे i2 है, मैक्स 3 है, i3 है, मैक्स 3 है. तो ये जो है एक कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया. सिमिलरली यहाँ पे i4 है, मैक्स 6 है, i5 है, मैक्स 6 है, i6 है, मैक्स 6 है. तो ये पार्ट जो है ये सेकेंड कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया. तो टोटल कनेक्टेड कंपोनेंट 2 हो गए. कोड देख लेते हैं. यहाँ पे मैंने एरे लिया इनपुट. यहाँ पे मैंने मैक्स डिक्लेयर किया, मैक्स एलिमेंट टिल नाउ. और यहाँ पे टोटल कनेक्टेड कंपोनेंट्स ये 0 इनिशियलाइज किया और इटरेट किया और मैक्स को अपडेट किया. और if i+1 इंडेक्स बराबर मैक्स देन कंपोनेंट को इंक्रीज कर दिया और फाइनली टोटल कंपोनेंट्स को प्रिंट कर दिया. So that's it.